नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हेजेमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर। अब हमने ये तो देख लिया कि यूएस की हेजेमनी एज अ हार्ड पावर, क्या उसमें एज अ हार्ड पावर व्हाट ऑल डज इट इंक्लूड? इट बेसिकली इंक्लूडेड द मिलिट्री डोमिनेंस एस्पेक्ट ऑफ द यूएस हेजेमनी। अब जो हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर है उसमें we actually focus our attention towards the economic power of US, कि उनकी इकोनॉमिक पावर क्या है वर्ल्ड में, कि यूएस कैसे डोमिनेट करती है ऑल इकोनॉमिक अफेयर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द हेजेमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर इज रिफ्लेक्टेड इन यूएस's रोल इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स। तो जो मेन एस्पेक्ट है जो हमें इकोनॉमिक पावर के बारे में बताता है यूएस की, वो ये है कि यूएस एक्चुअली परफॉर्म्स द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स टू द वर्ल्ड। ऑलराइट, अब ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स क्या है? ग्लोबल पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पूरा वर्ल्ड यूज कर सकता है, but their actual creation was actually in the hands of USA. मतलब USA actually provided the world with these global public goods which every country in the world utilizes for its own purposes. All right, अब इस global public goods के examples are as follows. All right, ग्लोबल पब्लिक गुड्स के हम 3 एग्जाम्पल करेंगे। अब पहला एग्जाम्पल है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट आर दी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन? जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है विच आर कॉल्ड SLOCs, these SLOCs are basically nothing but sea routes used by merchant ships। मतलब जो भी routes हैं which merchant ships, trading ships and all like any kind of merchant ship which has to go from one country or one region to another region, they have to make use of these sea routes. Alright, अब ये sea routes किसने बनाए? These lanes of communication ये किसने बनाई? USA ने। So USA basically provided the world with sea lanes of communication. इस sea lanes of communications actually comprise of sea routes। मतलब ये पूरे रास्ते जहां से एक रीजन दूसरे रीजन को कनेक्ट करता है, वो राउट यूएसए ने बनाया था पूरे वर्ल्ड के लिए। ऑलराइट, सो every country in the world makes use of these SLOCs. These SLOCs are very important to each country in the world because these SLOCs provide the main way for free trade. Alright, ये एक बहुत ही important aspect है free trade का, because these SLOCs provide the way, the route for trading. Alright, so the merchant ships which carry the cargoes and basically resources which are to be traded with other countries go through these sea lanes of communication which the US has provided the world with. A second example of US's hegemony as a structural power would be US का naval power। अब जो नेवल पावर्स का मतलब क्या है? नेवल पावर मतलब नेवी की पावर। व्हाट इज द नेवी? नेवी इज द डिफेंस ऑन द सी एस्पेक्ट, लाइक इन द ओशन। जो हमें डिफेंस, जो हमें मिलिट्री डिफेंस है, हमारा ओशन में जो मिलिट्री डिफेंस यूटिलाइज होता है वो उसे हम नेवी बोलते हैं। अब इस नेवल पावर का क्या मेजर रोल है? जो यूएस नेवी है, जो यूएस की नेवी पावर है वो मल्टी ओशियनिक है। मतलब कि वो यूएस's नेवी इज एक्चुअली प्रेजेंट इन a lot of oceans. All right, मतलब they are not only present in only, like for example, if the Indian Navy is only present in Indian Ocean, whereas the US की नेवी है वो Pacific Ocean में भी होगी, वो Arctic Ocean में भी होगी, या वो Antarctic Ocean में भी होगी। So that is what is meant by multi oceanic US नेवी। ऑलराइट, सो जो यूएस की नेवी है वो बहुत सारे ओशंस में एस्टैब्लिश्ड है, एंड दिस मल्टी ओशियनिक नेवी plays the role of underwriting laws of the sea and ensuring freedom of navigation। मतलब जो यूएस की नेवी है, बेसिकली नेवी की पावर का मतलब यही होता है कि उनको एक्चुअली whoever the hegemon is, all right, whoever the most dominant superpower in the world is, gets the responsibility, gets the role of underwriting laws of the sea। मतलब इंटरनेशनल लॉ बनाना होता है pertaining to sea,
pertaining to oceans. मतलब sea laws क्या होने चाहिए, मतलब what should be the laws pertaining to the sea, कितना sea का area should be considered as a territory of a particular country, और how much, कितना territory के बाद वो पूरे world की property बच जाती है. So all of these laws which the sea laws which are a part of international law, USA had, the US Navy की major responsibility थी कि US Navy ही इन laws को बनाए, इन laws को लिखे. So US Navy played the role of writing laws of the sea, and also US Navy ensures freedom of navigation. मतलब US Navy का ये responsibility है कि वो सारी दूसरी navies को एक freedom दे to navigate the oceans of the world. All right. So this particular aspect of the US Navy tells us about the structural power of the United States of America. मतलब उनकी US की Navy इतनी powerful है, इतनी dominant है कि they are actually responsible to create laws of the sea, and also they are required to ensure कि सारी world की navies को एक freedom मिले navigate करने की ocean. So the US Navy plays a major role in establishing the structural power of the United States of America. Now the third point is the internet. कि अब internet is also a global public good. Alright, हम सब internet, we are all dependent on internet today. So this internet की कहाँ से आया था? Many of us don't know about this, but internet was actually a result of a US military research project in 1950. Alright, जो United States of America का एक military research project था, जिसमें it was actually made possible that they actually stumbled upon this creation called internet. So it was the USA which provided the world with the internet. Alright, so internet facility जो है वो USA ने मेक की है, मतलब वो टेक्नोलॉजी कभी भी किसी और कंट्री ने नहीं बनाई है, वो USA ने बनाई है. USA का एक मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसमें they actually accidentally found this particular internet. All right, so internet was created in 1950 by USA, and most of the satellites जिस पे internet dependent है वो भी mostly are owned by the US government. All right, now the fourth point, USA actually has a 28% share in the world economy. मतलब 28% of the world economy is under the control of the USA. 28% share of the world economy का ये मतलब हुआ कि 28% of world's wealth is with USA alone. Alright. Now the fifth point, 15% of the world trade. So USA accounts for about 15% of the world trade, including the intra-European Union trade. Alright. This means that world trade, whatever every country trades with another country for many resources. Alright. But USA alone, पूरे world trade को अगर तुम देखोगे तो उसमें से सिर्फ 15% alone USA share है. मतलब USA का share in the world trade is about 15%. Alright, and there is not even, like, in every sector of the economy, in all the top 3 lists, मतलब हर sector of the economy, agriculture, tertiary sector and industrial sector, any sector of the economy को अगर तुम देखो और उसकी top 3 lists देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि तुम्हें एक भी ऐसी list नहीं होगी जिसमें USA की कोई ना कोई एक firm top 3 में ना आए. That means that the economic power of the US is so supreme, so advanced that nobody can compare their economy to the economy of USA's. They have a 28% of the share of the world's wealth, and they have a 15% share in the world trade. All right. Now the sixth point that actually tells us about hegemony as a structural power, that tells us about USA's hegemony, is the degree called Masters in Business Administration. Masters in Business Administration, that is more frequently known as MBA. MBA was a degree which was actually made by the USA. MBA is such a prestigious degree nowadays. We all are like that. We all know at least one MBA aspirant in our families.
and this particular MBA was actually created by USA. ये academic degree did not exist before 1950s around, all right? So the concept that business is a skill that academics can actually, that you can actually study about was uniquely American in nature. Business में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को का एक एकेडमिक कोर्स डेवलप करना ये यूएसए ने किया था, नॉट एनी अदर कंट्री. सो यूएसए इज द कंट्री व्हिच वाज रिस्पांसिबल for creating this academic degree called Masters in Business Administration, which also tells us about the economic hegemony of USA. So these were the points which tell us about how USA is a major economy, how hegemony as a structural power, कैसे यूएसए की कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक माइट है, कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक पावर है, कितना ज़्यादा ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है इन द वर्ल्ड.